गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है डेवलपिंग कंट्री स्टेटस। तो चाइना जो है वो डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस एंजॉय कर रहा है डब्ल्यूटीओ में, और इसको लेते हुए कुछ अपर मिडल इनकम कंट्रीज़ जो हैं और बाकी भी कंट्रीज़ ने जो है वो सवाल उठाया है और ये बोला है कि चाइना जो है वो कैसे डब्ल्यूटीओ के जो है डेवलपिंग कंट्री का स्टेटस कैसे एंजॉय कर सकता है। तो क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको लेकर जो है डेवलपिंग कंट्री का टैग लेकर जो है बेनिफिट्स ऐसे क्या मिलते हैं जो कि चाइना या फिर इवन इंडिया, इंडिया तो चलो डेवलपिंग कंट्री है, लेकिन चाइना जैसी कंट्रीज़ क्यों डेवलपिंग कंट्री का टैग जो है वो नहीं छोड़ना चाहती, ये देखते हैं। तो कुछ डब्ल्यूटीओ के जो एग्रीमेंट्स हैं वो डेवलपिंग कंट्रीज़ को थोड़ी सी रिलैक्सेशन देते हैं, जैसे स्पेशल या डिफरेंशियल ट्रीटमेंट देते हैं। और उनको वैसे आपको पता है डब्ल्यूटीओ क्या करता है कि कहता है कि गवर्नमेंट जो है अपना इंडस्ट्री को कम सपोर्ट करे, फ्री मार्केट इकोनॉमी आनी चाहिए। लेकिन डेवलपिंग नेशंस जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनके लिए थोड़ी सी लीनियंट टारगेट होते हैं, वो उनको थोड़ा टाइम ज़्यादा मिलता है अपनी सपोर्ट सब्सिडीज़ या जो भी इंडस्ट्री को सपोर्ट करने के लिए वो जो अपने जो भी स्कीम्स चला रहे हैं उसको विड्रॉ करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम देता है वो एज़ कम्पेयर टू डेवलप्ड कंट्रीज़ को। उनको प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट भी मिलती है एज़ कम्पेयर टू अदर डेवलप्ड कंट्रीज़। तो इन अब इसीलिए जो है चाइना नहीं चाहता, क्योंकि चाइना जो है वो अपने आप को डेवलपिंग कंट्री कहकर सारे बेनिफिट्स लेना चाहता है ये, ठीक है। तो अब डिसाइड कौन करता है कि कोई कंट्री डेवलपिंग कंट्री है या नहीं। तो डब्ल्यूटीओ में डेवलप्ड और डेवलपिंग दोनों ही जो है कोई कहीं डिफाइन नहीं किया गया है। इसीलिए मेंबर कंट्रीज़ खुद को ही अनाउंस करते हैं कि वो डेवलप्ड है या फिर वो डेवलपिंग है। तो चाइना अपने आप को डेवलपिंग कंट्री ही अभी तक अनाउंस करता रहा है, तो उसके बेनिफिट्स वो ले ही जा रहा है। और जो है बाकी कंट्रीज़ जो है वो इसी के ऊपर सवाल उठा रहे हैं कि चाइना कैसे डेवलपिंग कंट्री क्लेम कर सकता है खुद को। सेम इसी कंटेक्स्ट में एक और न्यूज़ भी है जिसमें बांग्लादेश के ऊपर भी सवाल उठाए गए हैं कि वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का स्टेटस कैसे एंजॉय कर सकता है, क्योंकि उसका तो जो जीडीपी पर कैपिटा है वो इंडिया से भी आगे निकल गया है। अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, हमने डिस्कस भी किया था इसको। तो अब एलडीसी जो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री के स्टेटस के क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जिसको लेकर जो है बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ इस टैग को नहीं छोड़ना चाहती। तो जैसे कि ज़ीरो ड्यूटी, ज़ीरो कोटा एक्सेस मिलता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में, खासकर ईयू में जो है वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्रीज़ को कोई ड्यूटी नहीं पे करनी पड़ती वहाँ से ओरिजिनेट हुए प्रोडक्ट्स को। तो बांग्लादेश अभी इस टाइम पर कोई ड्यूटी पे नहीं करते बांग्लादेश के प्रोडक्ट्स, कोई कोटा उनको कोई एक्सेस जो है ज़ीरो कोटा एक्सेस मिलता है सारे एक्सपोर्ट्स का उनका ईयू को जैसे और डेवलप्ड कंट्रीज़ को। और लेकिन ये एलडीसी जो है वो कोई कंट्री खुद को डिक्लेयर नहीं कर सकती, इसके लिए यूएन बेस्ड क्लासिफिकेशन होती है जो कि हर 3 साल बाद एक क्राइटेरिया सेट किया जाता है कि समझ लो इतना इनकम क्राइटेरिया है, अगर इससे नीचे कोई कंट्री का इनकम है तो वो लीस्ट डेवलप्ड कंट्री होगी। तो ये क्राइटेरिया हर 3 साल बाद रिवाइज किया जाता है। तो अब आने वाले टाइम में कहा जा रहा है 2026 में बांग्लादेश का जो है लीस्ट डेवलप्ड कंट्री का जो टैग है वो हटने वाला है और ये बेनिफिट्स उसको अब नहीं मिलने वाले हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नैटमो। नैटमो क्या है? नेशनल एटलस एंड थीमेटिक मैपिंग ऑर्गेनाइजेशन। तो इन्होंने अभी एक ब्रेल मैप बनाए हैं डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए, ताकि विजुअली चैलेंज स्टूडेंट्स को ऑल ऑफ द ओवर द कंट्री पढ़ने का जो है कंटेंट उसका एक्सेस अच्छे से मिल सके, ठीक है। तो ये डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी क्या है? इसमें क्या होता है कि आपको प्रिंटिंग प्लेट्स की ज़रूरत नहीं है, केमिकल सॉल्वेंट्स मोल्ड्स कोई भी ऐसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है जिससे कि आप जनरल कन्वेंशनल वे में जो आप ब्रेल जो है लिखते हो, ठीक है। अब ये पहली बार ये टेक्नोलॉजी आई है और ये जो है डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ब्रेल मैप का यूज़ किया जा रहा है। अब ब्रेल जिसको नहीं पता तो उनको बता देते हैं कि जो हमारे विजुअली चैलेंज्ड होते हैं जो पर्सन्स वो ब्रेल का यूज़ करते हुए पढ़ सकते हैं, ब्रेल लिपि का यूज़ करते हुए पढ़ सकते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा ना कि वो खुरदरी सी लिपि होती है, उसको देखकर उसको टच करके पढ़ पाते हैं। तो ये डिजिटल एम्बॉसिंग टेक्नोलॉजी में डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हुए ये ब्रेल मैप बनाया गया है। और क्योंकि इसमें कोई फिज़िकल प्रोडक्ट्स का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इसलिए इसकी हाई स्पीड प्रोडक्शन की जा सकती है। ये ब्रेल मैप्स जो है बहुत ज़्यादा हम इसका यूज़ कर सकते हैं और ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए भी जा सकते हैं, ठीक है। तो ये नैटमो जो है 1997 में बनाई गई थी ये जो ये अब हमारी ऑर्गेनाइजेशन, और ये डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का ही एक ऑफिस है, अटैच्ड ऑफिस। और ये ब्रेल एटलस बनाया है इन्होंने 2017 में। और इनको इसी के लिए ही नेशनल अवार्ड ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन फॉर फिजिकली चैलेंज्ड दिया गया है, ठीक है, जो पीएम मोदी ने ही इनको ये अवार्ड दिया था 2017 में, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है नेशनल यूथ डे।
तो स्वामी विवेकानंद जी की जो है बर्थ एनिवर्सरी पर हम नेशनल यूथ डे सेलिब्रेट करते हैं। तो 12 जनवरी को जो है नेशनल यूथ डे हम आज के दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो रैशनल थिंकिंग प्रमोट करने के लिए यूथ में हम नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट करते हैं। तो इस साल का थीम है इट्स ऑल इन द माइंड। ठीक है, तो हम 1984 से नेशनल यूथ डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन हम नेशनल यूथ फेस्टिवल 1995 से बनाना शुरू किया है हमने। ठीक है, अब इस फेस्टिवल के थ्रू हम यंग लोगों को आपस में मिलने का, एक इंटरेक्ट करने का हम मौका देते हैं। ठीक है, इसी साल जो है हम इस साल जो है हम यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा हम स्वामी विवेकानंद जी के बारे में भी देखते हैं। तो वो एक मॉन्क थे, रामकृष्ण परमहंस जी के चीफ डिसाइपल थे। चीफ डिसाइपल जो थे उनके रामकृष्ण परमहंस जी के वो चीफ डिसाइपल थे। और इंडियन फिलॉसफीज़ वेदांता और योगा को उन्होंने प्रमोट करने का बहुत जो है वो कंट्रीब्यूट किया है उसके लिए। 1897, अभी एक मिस्टेक है, 1987 नहीं है, 1897 है। तो 1897 में उन्होंने रामकृष्ण मिशन भी बनाया। ठीक है, अब उन्होंने फर्स्ट पार्लियामेंट ऑफ रिलीजन को एड्रेस किया 1893 में शिकागो में, जो आपको पता होगा बहुत फेमस है उनकी ये स्पीच एक। ठीक है, अब उनकी वेदांता फिलॉसफी भी थी। ठीक है, वेदांता में जो है उन्होंने कहा कि उपनिषद की जो है इंटरप्रिटेशन से उन्होंने वेदांता फिलॉसफी दी। ठीक है, उसमें उन्होंने बोला कि ब्रह्मांड जो असली रियलिटी है वो जो है उसी के ही ऊपर जो है वेदांता फिलॉसफी बेस्ड है। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि वेद जो है वो अल्टीमेट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है हमारे लिए। सेक्रीफाइस की बजाय नॉलेज मतलब ज्ञान का जो पाथ है वो ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, और इंसान को लिबरेशन करनी है, अपनी संसार से मोक्ष लेना है। तो ये उसका एक पर्सन का या एक ह्यूमन सोल का अल्टीमेट मोटिव है मोक्ष लेना, जो कि है लिबरेशन फ्रॉम संसार। तो स्वामी विवेकानंद जी जो है वो वेस्टर्न एजुकेटेड ब्रह्मो समाजिस्ट थे शुरू में यंग एज में, लेकिन उन्हें उससे उनकी जो स्पिरिचुअल क्वेस्ट थे वो पूरे नहीं हो पा रहे थे। तो इसीलिए उन्होंने प्रैक्टिकल वेदांता जो है वो उसका प्रोपोनेंट बन गए वो। ठीक है, फिर उन्होंने बोला कि यूनिटी ऑफ मैन एंड गॉड की तरफ उन्होंने फोकस रखा। कर्म मार्ग ऑफ भर्म भागवत गीता का उन्होंने के ऊपर एम्फेसिस डाला। फिर उन्होंने बोला कि सेल्वेशन इन सेल्फलेसनेस, मतलब अपने सेल्फिश बिहेवियर छोड़ना से ही आपको जो है वो सेल्वेशन मिलेगा। ठीक है, उनका रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म और एक्लेक्टिसिज्म मतलब क्या होता है, बहुत सारी फ़िलासफ़ीज़ को आप जो है कंबाइन करके एक न्यू फ़िलासफ़ी बनाते हो। न्यू आप जो है बहुत सारी जो एजुकेशन का यूज़ करते हो, बहुत सारी नॉलेज का यूज़ करते हो, आप जो है एक यूनिवर्सल आप नॉलेज बनाने की कोशिश करते हो, उसको हम कहते हैं एक्लेक्टिसिज्म। ठीक है, तो रिलीजियस यूनिवर्सलिज्म का वो बात करते थे। और सोशल रिफॉर्मर भी थे। वो कहते थे कि जब तक इंसान का पेट भूखा है तब तक उसके उसके साथ भगवान की बात करना जो है वो सही नहीं है। तो मतलब पहले बेसिक नीड्स पूरी होंगी तभी आपका स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि गॉड वैसे तो हर जगह है, लेकिन एक इंसान में सबसे ज़्यादा जो है वो गॉड का मैनिफेस्ट होता है। ठीक है, फिर एजुकेशन जो उन्होंने बोला है कि वही जो है इंसान को अ, अ, भगवान से मिलाने की कोशिश कर सकती है। फिर वो आइडोलेट्री के, पॉलीथीज़म, रिलीजियस सुपरस्टिशंस, एक्सप्लॉयटेशन बाय प्रीस्ट, इन सब के अगेंस्ट थे। विमेन को वो इक्वल रोल दिलाना चाहते थे। स्पिरिचुअलिज्म ऑफ ईस्ट और मटेरियलिज्म ऑफ वेस्ट को वो कंबाइन करना चाहते थे। ठीक है, फिर नेशनलिज्म में उनका बहुत ही कंट्रीब्यूशन रहा है। उन्होंने हिंदू सेल्फ प्राइड और कल्चरल नेशनलिज्म के वो फेवर में थे। वो कहते थे कि वेदांतिक इंडिया होना चाहिए और जनरेशन ऑफ पैट्रियट्स और रेवोल्यूशनरीज होनी चाहिए। तो इंडिया को वो कहते थे कि मसल ऑफ आयरन चाहिए और नर्व्स ऑफ स्टील चाहिए। ठीक है, तो वो कहते थे कि इंडिया की जो पुरानी ग्लोरी है उसको रिटेन करने की हमें क्यों ज़रूरत है, हमें सेल्फ सफिशेंसी सेल्फ हेल्प की तरफ जाने की ज़रूरत है। तो आप देखोगे कि बहुत सी चीज़ें इसमें महात्मा गांधी को भी इंस्पायर करती हैं आगे आने वाले टाइम में। तो ये जो है नेशनलिज्म का जो कंसेप्ट है उनका काफ़ी हद तक महात्मा गांधी जी से मिलता है। ठीक है, सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है वर्ल्ड हिंदी डे। तो वर्ल्ड हिंदी डे के दिन जो है यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर ने इंडिया की जितनी भी यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं उनको उनकी डिस्क्रिप्शन को हिंदी में जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर वेबसाइट पर डाल दिया है। तो वर्ल्ड हिंदी डे जो है वो 10 जनवरी को हम हर साल मनाते हैं। उस दिन जो है हिंदी लैंग्वेज को वर्ल्ड वाइड हम प्रमोट करते हैं। तो सब क्यों मनाते हैं हम 10 जनवरी को, क्योंकि इसी दिन 1975 में पीएम इंदिरा गांधी जी ने एक वर्ल्ड हिंदी कॉन्फ्रेंस बुलाई थी। उसको पीएम इंदिरा गांधी ने भी ऑफ कोर्स अटेंड किया था।
और नागपुर में कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी और उसी से हम वर्ल्ड में हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करने का कोशिश करते हैं तब से, ठीक है। अब नेशनल हिंदी दिवस से इसको कंफ्यूज मत करना, क्योंकि वो सितंबर 14 को मनाया जाता है और उस दिन जो है इंडिया में यूनियन गवर्नमेंट ने हिंदी लैंग्वेज को वन ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेजेस जो है वो डिक्लेयर किया था 1949 में, ठीक है। सो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल। तो ये हम कई बार देख चुके हैं, पिछले कई महीनों से लगातार इसकी टेस्टिंग की जा रही है। कभी किसी तरह से टेस्ट करके देखते हैं, कभी किसी तरह से, जैसे अब इन्होंने जो है मिनिमम रेंज इसकी टेस्ट करके देखी है दोबारा से, ठीक है। तो डीआरडीओ ने ये इसका सक्सेसफुल फ्लाइट टेस्ट किया है मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल का। अब ये एंटी टैंक मिसाइल है, आपको इसी से पता लग जाएगा कि सामने वाले जब युद्ध हो रहा है तो सामने वाले के टैंक को आपको डिस्ट्रॉय करने के लिए ये मिसाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ये लो वेट फायर एंड फॉरगेट मिसाइल है, मैन पोर्टेबल लॉन्चर है। इसको मैन जो है मतलब हमारी फौज खुद लेके जा सकती है, इस मिसाइल का यूज़ कर सकती है, ठीक है। और ये जो है इसीलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जब कन्वेंशनल वॉर होती है, जब आमने सामने का युद्ध होता है, तो हमें टैंक्स जो है वो सबसे ज़्यादा तंग करते हैं, एनिमी टैंक, तो उनको हमको डिस्ट्रॉय करने के लिए और एक नॉर्मल हम आर्मर से उसको डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते, इसके लिए हमको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स चाहिए होते हैं, ठीक है। तो अब इसकी एक और इम्पॉर्टेंस है कि अगर एनिमी टैंक नहीं भी दिख भी नहीं रहा है, क्लियर शॉट नहीं भी है, तो भी इसका यूज़ करके हम एनिमी टैंक को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जो कि है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट। तो जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और जस्टिस AS बोपन्ना जो है सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने खुद को रिक्यूज़ कर लिया है कृष्णा वाटर डिस्प्यूट से के रिलेटेड एक केस से। तो रिक्यूज़ल ऑफ जज का मतलब क्या होता है, जब जज मना कर देता है कि मैं ये केस नहीं सुन सकता बिकॉज ऑफ वट एवर रीज़न, ठीक है, चाहे कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है, ये चलो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट छोड़ो, कभी ऐसा हो सकता है कि जज के कोई रिश्तेदार कोई केस आ जाए, किसी ऐसी कंपनी का केस आ जाए, या किसी ऐसी किसी ऑर्गेनाइजेशन का केस आए जिसमें उनके रिश्तेदार का कुछ स्टेक है। तो उसमें ऐसा सही नहीं होगा ना कि जज जो है वो उस केस को सुने। तो उसमें क्या होता है कि जजेस जो है वो कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बचने के लिए रिक्यूज़ कर देते हैं कि मैं ये केस नहीं सुन सकता, ये केस किसी और जज के बेंच को दे दिया जाए, ठीक है। तो अब कई बार ये भी होता है कि कोई जज, समझ लो जब हाई कोर्ट में था, तो उस जज ने कोई जजमेंट दी और वो पर्सन जो है जिसके खिलाफ जजमेंट दी गई वो उस जजमेंट से सेटिस्फाइड नहीं था, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट में मूव हुआ। तो जब तक वो सुप्रीम कोर्ट में मूव हुआ तब तक जो हाई कोर्ट के जज थे जिसने वो जजमेंट दी थी, उनकी प्रमोशन होकर वो सुप्रीम कोर्ट के जज बन गए। तो सेम अगर उन्हीं जज के पास वहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में केस आ गया है तो भी वो रिक्यूज़ कर देते हैं कि ये केस मैं ऑलरेडी पहले हाई कोर्ट में सुन चुका हूँ, इसलिए मैं दोबारा नहीं सुन सकता इस केस को, ठीक है। तो अब उन्होंने जो है, अब क्या रीज़न है, रीज़न तो बताया नहीं है ऑफ कोर्स जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी और AS बोपन्ना जी ने। तो उन्होंने खुद को रिक्यूज़ कर लिया है इस केस से। और ये रिक्यूज़ल कैसे किया जाता है, जज जो खुद होते हैं वो खुद इसको रिक्यूज़ करते हैं, कोई रीज़न बताने की ज़रूरत नहीं होती है उनको। या कई बार जो है लॉयर्स या पार्टीज़ होती हैं जो केस की, वो भी कह सकते हैं जज को कि आप इस केस से रिक्यूज़ कर लो, क्योंकि जो भी रीज़न है, ठीक है। तो अब कोई फॉर्मल रूल्स तो नहीं है इस रिक्यूज़ल के, ठीक है। तो रंजीत ठाकुर वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो जज हैं उनको ऐसे केसेस में जिसमें उनको लगता है कि सामने जो पार्टीज़ इन्वॉल्व हैं उनके दिमाग में कहीं ये इंप्रेशन ना चला जाए कि ये एक बायस जजमेंट है, तो सामने वाले का सोच कर उनको खुद को रिक्यूज़ करना चाहिए, कोई भी शंका नहीं रहने देनी चाहिए, ठीक है। तो ये अब इस इशू में है क्या, अब कर्नाटका और आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के बीच में जो है रिवर वाटर एलोकेट हो गया था 2010 में। लेकिन हुआ क्या, 2014 में तेलंगाना सेपरेट स्टेट बन गई। तो आंध्र प्रदेश ये कह रहा है कि तेलंगाना को एक सेपरेट स्टेट मानते हुए पानी जो आपने डिवाइड किया है 3 स्टेट्स में, उसको हम आंध्र प्रदेश में से शेयर मत नहीं देंगे, उसको तेलंगाना को एक अलग स्टेट माना जाए। तो 4 स्टेट्स के अंदर जो है वो पानी को डिवाइड किया जाए, ठीक है। तो कृष्णा वाटर डिस्प्यूट आपको पता है कि शुरुआत में 1960s का डिस्प्यूट है, हैदराबाद और मैसूर स्टेट्स होती थी तब उनके बीच में डिस्प्यूट हुआ था ये। और ये 1969 में कृष्णा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल बना। फिर उसके बाद जजमेंट आई 2010 में। इस जजमेंट को, जो कि 1976 की जजमेंट थी जिसमें 2060 TMC वाटर जो है वो बांटा गया था इन 3 स्टेट्स में, महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश में, 2010 में इसको भी जो है वो फर्दर डिवाइड किया गया। लेकिन अब उस जजमेंट को भी कहा जा रहा है कि इसमें तेलंगाना जो शामिल नहीं है, तो इसलिए इसको भी डिवाइड करो, फर्दर डिवाइड करो, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश डिमांड कर रहा है।
तो कृष्णा रिवर के बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो सेकंड लार्जेस्ट ईस्ट फ्लोइंग रिवर है, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका से निकलती है। बालाघाट रेंज जो है वहाँ इसके नॉर्थ में पड़ते हैं, ईस्टर्न घाट साउथ में पड़ते हैं, वेस्टर्न घाट्स इसके वेस्ट में पड़ते हैं। तो ये सतारा डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में, महाबलेश्वर के पास से ये कृष्णा रिवर ओरिजिनेट होती है। 1400 किलोमीटर की रिवर है। 75% प्लस एरिया इसका एग्रीकल्चर लैंड में आता है। कृष्णा डेल्टा जो है वो 35 किलोमीटर तक जो है वो सी में, बे ऑफ बंगाल में वो फैला हुआ है। ठीक है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is developing country status. So you know that China has been enjoying the developing country status at the World Trade Organization. So certain countries have raised concerns that the China is not a developing country anymore, and it is deliberately keeping itself low so as to enjoy the benefits which are available for developing countries. So why? What are the benefits? What are the kind of benefits that are attached to developing country tag in at the WTO? So you know that WTO agreements give a certain special preferences to developing countries. Like you know that WTO is basically a free market proponent, and it asks the countries to withdraw support to their industries so that free market economy can take place. But for developing countries, it has some lenient targets as compared to developed countries. So China does not want to be clubbed into the developed countries group, because otherwise it would have to achieve the targets at much uh, 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 it has to achieve targets much earlier than the other developing countries like India, of course. Okay, so it wants to enjoy the preferential treatment it is getting with the developing country tag. So India, so how this developing country or developed country status is decided? So because WTO has not defined any developed or developing country definition, has not been given by WTO, so member countries are free to announce themselves if they are developed or developing. Okay, so that's why China keeps on ranting that it is a developing country. So India has also self-designated itself as a developing country. Okay, so of course India is as a developing country, unlike China. China has become the second largest economy, and it is poised to become the largest economy of the world in the next few years, or in the next few decades, of course. So there is one more news related to this particular story. WTO, the this Bangladesh has similarly enjoying the least developed country status, like China is enjoying the developing country status. So there are concerns raised by some member states that uh, Bangladesh has overtaken India in terms of GDP per capita. Then how come this Bangladesh can enjoy this least developed country status? So what are the benefits of least developed country status? So they enjoy zero duty access, or the zero quota access to the developed countries, and their products enjoy certain benefits. So their exports get comparatively cheaper than the other market participants. Okay, so that's why Bangladesh has, Bangladesh is a very big export market, so it does not want to lose out its export potential just because of this. So that's why it is keeping itself as the least developed country. Okay, so how LDCs are decided? So WTO recognizes LDCs after the based upon the classification given by the UN. So this classification or criteria for least developed countries are reviewed after every 3 years, and it is believed that by the year 2026, Bangladesh will also lose this least developed country status. Okay, so now let us see the next topic, which is NATMO. So National Atlas and Thematic Mapping Organization has developed this Braille maps. Braille is a language which is used for by the visually challenged people to read and write and understand. So they have developed this Braille maps. NATMO has developed these Braille maps, which will be used by the visually challenged students all over the country. And these maps have been developed by using the digital embossing technology. So this is a digital technology. That's why there is no need for any printing plates, molds, chemicals, and solvents. So this maps can be created because of no need of extra material. These production of these Braille maps can be enhanced, and high speed production can be ensured. So Braille maps will be given to more and more people
in the next few years. Okay, so this NATMO is basically the attached office of Department of Science and Technology, and they have published this Braille Atlas for visually challenged people in the year 2017. For that, only Prime Minister Modi also conferred them with the National Award on Science and Technology intervention for physically challenged. Okay, so now let us see the next topic, which is National Youth Day. So, to honor Swami Vivekananda's contribution to the country, a government in 1984 started celebrating his birth anniversary on 12th of January as the National Youth Day. So, the aim of this day is to promote rational thinking among the youth. So, for this year, the theme is It's All in the Mind. Okay, so since 1995, we are also celebrating the National Youth Festival, and the objective of of celebrating this festival is to provide opportunity to youth to so that they can interact and exchange their ideas. And this year, this festival will be celebrated at the UT of Puducherry. So about Swami Vivekanand ji, he was a monk and chief disciple of Ramakrishna Paramhans ji. So he introduced the philosophies of Vedanta and yoga to the Western world, and he established Ramakrishna Mission in 1897. So there is a typo here. It is not 1987, of course, it is 1897. And he represented India at the first Parliament of Religion. You know that his Chicago speech is very famous. Um, so let us see about his philosophy of Vedanta also. So his philosophy of Vedanta is based upon Upanishads, and its aim was to inquire about Brahman, that is the ultimate reality. So based upon this, as per Vedanta, everything else is unreal, but Brahman is the ultimate reality. Okay, so Vedas are the source of ultimate source of information, and the path of knowledge, that is Gyan, is more superior than any sacrifice that we can make for to attain moksha or the liberation. Okay, so he earlier joined the Brahmo Samaj, but Samaj were Western educated spiritualists, so they could not satisfy the spiritual quests of Swami Vivekanand ji. So that's why he joined the he became a proponent of practical Vedanta, and he believed in the essential unity of man and God. Okay, so he followed the karma marg of Bhagavad Gita, and he based upon that he gave the ideas of religious universalism and eclecticism. Eclecticism, I explained it to you, that it is a combination of several philosophies into one. Okay, so as to make a universal philosophy. So he was also a social reformer. He had supported women, equal role for women in society. He was against idolatry, polytheism, religious superstitions, and even exploitation by the priests. So he was strictly in favor of education, because he thought that education can manifest itself. Education is a manifestation of divinity to the man. So he said that God is everywhere, but he is most manifested in man. He is a proponent of nationalism. He focused upon Hindu self pride and cultural nationalism. So just don't confuse it with parochial nationalism of any religion. This is different from what you are thinking right now. Okay, so his idea was all about focus upon man making. He was instrumental in promotion of Vedantic India. He gave the call of self sufficiency and self help, and he inspired a whole generation of patriots and revolutionaries. So you know that he made a declaration that India needs muscles of iron and nerves of steel. Okay, so now let us see the next topic, which is World Hindi Day. So on the occasion of World Hindi Day, that is on 10th January, UNESCO's World Heritage Center has launched this description of India's UNESCO World Heritage sites on the WHC website in Hindi language. So World Hindi Day is celebrated on 10th of January every year, because on this very day in 1975, World Hindi Conference was organized at Nagpur in Maharashtra, and even PM Indira Gandhi joined that conference. And since then we have been celebrating it as the World Hindi Day, because we want
because through this conference, uh, every year we try to promote this use of Hindi language worldwide. So don't confuse it with September 14th, because on that day we celebrate National Hindi Divas or Hindi Day. On that very day in 1949, the Hindi language was accepted as the official language of the Union Government of India, and that is separate from World Hindi Day. Okay, so now let us see the next topic, which is man portable anti-tank guided missile. So, we have been discussing it a lot. We have discussed it, I think, 4 or 5 times in the last 1 year. This man portable anti tank guided missile has been successfully flight tested once again. This time, the DRDO tested its minimum range. So, it is an anti tank missile. It's a low weight fire and forget missile. It can be launched using a man portable launcher. So, it is like its name can give you an idea that it is an anti-tank missile. Okay, so in case of a conventional warfare, you need to destroy the enemy tanks, and because they are the a big line of defense of the enemy, so you cannot destroy it with using the simple armor. So you need specific missiles. These anti-tank guided missiles are required. And what is the significance of this missile is that even if you do not have a clear shot, you can use this missile and it will destroy the enemy tank. Okay, so it can go past conventional defenses. Okay, so it has been tested once again, and I hope the DRDO does not test it once more, because it has tested its maximum range, minimum range, its uh, maneuverability. Everything has been tested, and this time, of course, DRDO has tested its minimum range. Okay, so now let us see the next topic, which is Krishna water dispute. So Justice D.Y. Chandrachud and Justice A.S. Bopanaji of Supreme Court have recused themselves from the Krishna river water dispute. So why does a judge recuse himself from a case? So there can be a conflict of interest, like I was telling you earlier. Let's suppose that a judge has a relative who is involved in a case which he or she is hearing. Then in that case there will be a conflict of interest. In that case, the judge would recuse himself from that case, and he would request other judges of the Supreme Court to hear that case. Similarly, there can also be a situation where the judge had earlier heard that case as a high court judge, but later on, when he became the Supreme Court judge, the case by chance came to himself in the Supreme Court. In that case also, the judge can refuse, or I'm sorry, recuse himself from hearing that particular case, because there is no particular criteria, there are no formal rules governing recusals. So it basically rests upon the conscience of the judge, or the discretion of the judge to recuse himself from a case or not. Okay, so but in a particular case, Ranjit Thakur versus Union of India of 1987, the Supreme Court said that the judge, whenever he or she is thinking about recusing or not recusing a case, he or she should look at the mind of the parties before him, and then decide if his not recusing a case would, what kind of message would it give to the parties who are involved in the case which is he or she is hearing. Okay, so this dispute is that Karnataka had sought that this Supreme Court order of 2011 must be published in the official gazette, so that river water can be distributed between the states of Karnataka, Andhra Pradesh, and Maharashtra. But the Andhra Pradesh is saying that how can you distribute the 2000 the river water based upon 2001, because after in 2014 a separate state of Telangana has been created, and now Andhra Pradesh wants four parties to this Krishna water dispute, and it wants this Krishna water river Krishna water to be distributed between four states. Okay, so you know that Krishna water dispute is continuing since when there was Hyderabad and Mysore states, and in 1969 Krishna water disputes tribunal was established. 1976 2060 TMC of water was distributed between these three states. Later on in 2011, this distribution was further refined, but now there is another this case is again pending, because
Telangana has been created, and Andhra Pradesh is demanding that it should also become a party to this dispute, and they should also get the share as a separate state. Okay, so about the Krishna River, it is the second largest east flowing river of Deccan Peninsula. Its basin extends over to Andhra Pradesh, Maharashtra, and Telangana, and it is bounded by Balaghat range on the north, Eastern Ghats on the south, and Western Ghats on the west. So it originates from Satara district of Maharashtra, and it originates just near the Mahabaleshwar district, and the total length of the river is about 1400 kilometer. About 75% plus area of the basin of Krishna water river lies as the agriculture land, and its delta, Krishna river forms delta in Bay of Bengal to about 35 kilometer in the sea. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.